Assalamu alaikum, everyone. And you can also see the presentation. Yes, sir, we can see your presentation. Right, thank you. Okay. I'm starting the session. Assalamu alaikum, everyone. मेरा brief introduction जो आपने सुना तो I head the technical department of ICAP. I sit in Islamabad, so that's why I'm joining from Islamabad, and we are having this couple of sessions virtually. Starting with the related party transactions, and then we will have another session on 4th and 5th schedules of the Companies Act. So related party transactions may, I believe there are a couple of aspects. One, the financial reporting side, and the other is the audit side. I will touch upon the financial reporting requirements, and then we'll also explain the audit aspects of related party disclosures and transactions. जहाँ तक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ताल्लुक है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ISA या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है जो कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स से को एड्रेस करता है. We all know that IS 24 जो है वो certain related party related जो definitions कह लें वो explain करता है and also outlines the disclosures or disclosure requirements for related party relationships and transactions. The primary reason for a separate standard on related party transactions and disclosures is that the transactions with related parties are of such nature, and the relationships are of such nature as well, they can impact the performance or financial position of the entity. So for example, अगर एक entity है और वो अपने parent के कहने पे या group company के कहने पे certain transactions कर रही है तो ये एक aspect हो सकता है. इसी तरह the same entity might not be entering into transaction with a specific entity in जो कि outside the group है on the instructions of the parent. तो ये भी एक sort of a related party relationship की वजह से वो ये decisions ले रही है. तो इस वजह से ये जो रिलेशनशिप होता है या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि दे हैव टू बी शेयर्ड विद द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उस सिलसिले में IS 24 जो है वो सबसे पहले ये बताता है कि रिलेटेड पार्टी होती कौन सी हैं और फिर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं वो किन पार्टी से रिलेटेड देना होता है और किस एक्सटेंट तक देना होता है. सो स्टार्टिंग विद दैट, हु इज अ रिलेटेड पार्टी. IS 24 में सबसे पहले एक person is controlling or jointly controlling or having a significant influence over the reporting entity or is a key management personnel of the reporting entity, then that individual, that person is a reporting and is a related party. तो सबसे पहले तो ये एक हम definition को analyze कर लेते हैं कि IS 24 के मुताबिक अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन जो है उसका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या की मैनेजमेंट पर्सनल है ऑफ एन एंटिटी, तो वो एंटिटीज के लिए रिलेटेड पार्टी होगा. सिमिलरली जो अदर इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं या डेफिनेशन के एस्पेक्ट हैं वो ये है कि इफ द एंटिटीज आर इन द सेम ग्रुप, सो पेरेंट सब्सिडरीज जो हैं वो आपस में रिलेटेड पार्टीज होती हैं. इसी तरह अगर एक एंटिटी इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, तो ये दो एंटिटीज यानी जो एंटिटी रिपोर्ट कर रही है, सो इन दिस एग्जांपल एंटिटी ए जो है वो क्योंकि उसका जॉइंट वेंचर है तो वो जॉइंट वेंचर की भी रिलेटेड पार्टी है, एंड इफ द एंटिटी ए हैज एन एसोसिएट, तो एंटिटी ए इज एन रिलेटेड पार्टी ऑफ द एसोसिएट. फिर हम ये देखते हैं कि IS 24 ये भी कहता है कि अगर both entities are joint venture of the same third party, तो वो भी आपस में related parties होंगी. So इसमें अगर हम diagram देखें तो entity S जो है has two joint ventures, तो JV1 and JV2 जो हैं are each other's related parties because they have the entity S is having controller is having the joint venture or has established the joint ventures. Similarly, we know that जो post-employment benefit plans होते हैं, they are also related parties. So if entity A has a plan for the employees as a post-employment plan, so entity A and the plan would be related parties. हमने initially देखा था कि
जो पर्सन्स होते हैं वो रिलेटेड पार्टीज होते हैं इफ द पर्सन हैज अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और इज अ की मैनेजमेंट पर्सनल। तो IS 24 जो है वो इस पर्सन की वजह से कुछ और रिलेशनशिप्स को भी रिलेटेड पार्टी इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल इफ द सेम पर्सन जो कि हम अभी शुरू में बात कर रहे थे कंट्रोल्स जॉइंटली कंट्रोल्स टू एंटिटीज। सो जो इंडिविजुअल है is controlling or jointly controlling two entities. So entity A and entity B are related parties. Similarly, if the same person controls one entity and has significant influence over the entity, another entity, so जो entity A and entity B are related parties. तो ये इस individual की वजह से relationship में फिर ये दो entities भी आपस में related parties हो जाती हैं। If the same person controls one entity and is also key management personnel of another entity, तो जो entity A and entity Z are related parties. तो ये कुछ definition की explanations हैं और उसकी एक pictorial representation है of IS 24। फिर हम जब move करते हैं towards the disclosures, तो IS 24 certain disclosures requirements established करता है and the entities are required to consider these for provision in the financial statements. Starting with the first one, which is parent subsidiary relationships. तो उस केस में IS 24 irrespective of any transaction require करता है कि name of the parent, name of the ultimate parent अगर है तो वो बताना है। और ये भी कहता है कि in case के the financial statements or consolidated financial statements are not prepared by the parent or ultimate parent, then the name of the most senior parent जो कि उस स्ट्रक्चर में इस रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर मौजूद है, तो उसका नाम बताना है which and that entity is supposed or is presumed to be preparing consolidated financial statements. In Pakistan context ये डिस्क्लोजर काफी इस तरह रेलेवेंट हो जाता है कि पाकिस्तान में the corporate law requires generally every company to prepare, any holding company to prepare consolidated financial statements except for जो certain हैं, तो उस केस में फिर ये डिस्क्लोजर एप्लीकेबल होता है। इसी तरह की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो की मैनेजमेंट की कोई भी बेनिफिट्स के लिए प्लान्स वगैरह हैं तो उनका डिस्क्लोजर देना होता है। सिमिलरली जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल में ये है कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताना होता है। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज वेदर सब्सिडरी है, एसोसिएट है या कोई और रिलेशनशिप है। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस विद अ पर्टिकुलर पार्टी जो है वो बताना होता है, अलॉन्ग विद उसकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं एट द ईयर एंड एंड एनी गारंटीज गिवन और रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, ये भी डिस्क्लोज करना है। एंड लास्टली जो IS 24 रिक्वायर करता है वो ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और उस सिलसिले में अगर इफ देयर इज एनी राइट ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो दे हैव टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड फॉर रिलेटेड पार्टीज। दीज आर द फ्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द रिलेटेड पार्टीज विद इन IS 24, वो समराइज्ड हैं। In addition to IS 24, we also know that the Companies Act जो है वो 4th और 5th schedule में certain disclosure requirements provide करता है, and those disclosure requirements are in addition to the requirements within IFRS or other financial reporting framework. तो जो disclosure requirements of 5th schedule है, ये companies 4th and 5th of the Companies Act हैं, तो we would be having a look at those requirements in the coming presentation, और उसमें हम related party से relevant जो disclosures हैं वो भी देख रहे होंगे। So in addition to these requirements, the 4th and 5th schedule also outlines certain requirements for related parties. Now a quick quiz जिसमें ये है कि if Mr. Bilal is a director in two companies, should the company A and company B, should company A and company B be considered related parties? तो इसमें अगर हम एनालाइज करें तो Mr. Bilal जो है is a director in two companies, so and the two companies
इसका जो जवाब है वो would not mean a yes or no. It will depend on the circumstances or the analysis. So if Mr. Bilal जो है is controlling or jointly controlling company B A and is also controlling or jointly controlling or has a significant influence over company B, तो फिर ये होगा कि जो कंपनी A is a related party of company B. However, अगर ऐसा है कि Mr. Bilal जो है has a significant influence over company A and company B, तो उस केस में company A and company B जो है वो related parties नहीं होंगी. So I think ये इसका answer would lie in further analysis and sort of relationship that Mr. Bilal would be having with company A and company B, and the extent of his control, joint control or significant influence over both the entities. Similarly, if in another case, if a company is procuring or purchasing raw material from a company, and the question would be that a significant number of transactions or a significant portion or chunk of raw material is procured from a particular supplier. So would that relationship with the supplier result in establishing it as a related party? On this, IS 24 explains or mentions that the relationship with the suppliers, with customers, with distributors, etc., in themselves, irrespective of the size or volume of transactions, do not make them related parties. So, इस case में merely because it's ABC Limited is a key supplier and providing a substantial portion of raw materials or any other stuff, will not result or will not make ABC Limited as a related party. एक और जो एस्पेक्ट है IS 24 का वो ये भी है कि IS 24 जो गवर्नमेंट से में ओन्ड एंटिटीज हैं उनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या डिस्क्लोजर्स की एग्जेम्पशन देता है. So for example, if there is a transaction between OGDCL and SSGCL or SNGPL, because both the companies are owned by the government, so in the OGDCL is not required to disclose transactions with SSGCL because IS 24 ये कहता है कि जहाँ government relationship को between the related parties and the government is controlling both parties, तो वहाँ पे disclosure की requirement नहीं है या exemption है. So this is a brief of IS 24. जिसमें I briefly explain the definition aspects and also the disclosures जो कि IS 24 के अंदर हैं. And now we will move to the next portion, which is audit of related party transactions. The question again for audit of related party transactions जो है उसमें ये आता है कि why there is a focus on this particular aspect, related party transactions, disclosures या relationships के ऊपर auditor का क्यों focus होना चाहिए, and why there is a separate standard on this within the ISAs, within auditing standards on this subject. Perhaps there could be a few reasons. Number one, एक तो हमने अभी देखा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जनरली, फॉर एग्जांपल जो IFRS हैं या कोई और फ्रेमवर्क्स हैं, जनरली जिसको हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, तो वो इस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिलेटेड पार्टीज. सो वन एस्पेक्ट फॉर द जो एक सेपरेट स्टैंडर्ड का है या उसको वो ये हाईलाइट करता है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं या अरेंजमेंट्स या disclosures कहने financial reporting के perspective से, auditor has to ensure that they are in accordance with the financial reporting framework. So there's a focus from the audit side on the I would say adequacy of accounting and disclosures of related party relationships and transactions. Another aspect of focus or probable reason for a separate standard is that जो related party transactions या arrangements होते हैं, because of as I mentioned earlier, their nature or because of their significant influence आप कह रहे हैं या control, वो इस नौयत के होते हैं कि they can affect the financial reporting of the other entity.
And it was also noted that जो कि है कि बाज जो fraudulent financial reportings होती हैं, they are done through related parties. So that's another reason for auditors focus on related party transactions and arrangements. And within ISAs, we know that ISA 550 जो है वो related parties की audit से relevant है, and we will be having a brief look on the key aspects of ISA 550. So first, we start with the objectives of auditor as far as the related party relationships and transactions are concerned. So पहला तो ये है कि ISA 550 requires the auditor to recognize fraud risk factors for related parties. Fraud risk factors का ये मतलब नहीं है कि हमेशा fraud risk factors होंगे, लेकिन auditor has to focus or consider these aspects specifically when considering the related party relationships and transactions. So one aspect is this. Secondly, objective ये है कि the appropriate identification हो of related parties, the related parties are appropriately accounted for, जो उनकी transactions हैं in accordance with the financial reporting framework, and the disclosure is also as per the requirements of the relevant framework. So this is another requirement, and auditor has to ensure that there is the related party relationships and transactions are appropriately identified, accounted for, and disclosed. And the last bit is the conclusion, जो कि every audit's objective is, and for related parties, the conclusion revolves around that the related party transactions and arrangements जो हैं, they are not impacting on the auditor's opinion. So auditor has also to consider the impact of any non-disclosure or unidentified related party on the auditor's report. So conclusion के context में, audit opinion के context में भी ये related party disclosures and accounting relevant है. So these are the three main objectives जो कि auditor के हैं, and for this the auditor जो हमारी risk assessment होती है, planning stage and risk assessment ये कह लें, जहाँ पे हम initially related parties को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझ रहे होते हैं बेस्ड ऑन द इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, और फिर उसकी रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड रिस्क और एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क होता है. सेकेंडली जो है जो हम टेस्टिंग कर रहे होंगे वो रिस्क रिस्पॉन्स कह सकते हैं, एंड द लास्ट बिट इज द कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग. एंड सो वी वुड बी इन द कमिंग स्लाइड्स हैविंग अ लुक एट ऑल दीज जो कह लें स्टेजेस कह लें of audit of related party transactions and disclosures. And as we know that all these जो हमारी activities होती हैं, they have to be documented as per ISA 230. So जो documentation है would go along from initial stage till the very end, that is the reporting. So why make risk assessment? Why we have to make a risk assessment about related parties? So as I briefly explained in the beginning that the entity may fail to identify or disclose related party relationships and transactions. So ऐसा भी हो सकता है कि एक entity जो है unintentionally is not able to identify or disclose related party relationships and transactions. So एक ये aspect है, and secondly जो fraudulent हम रिपोर्टिंग का जिक्र कर रहे थे, तो एंटिटी में यूज आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो ये और एस्पेक्ट है. तो ऑडिटर को दोनों को क्योंकि ये हो सकता है, तो ऑडिटर हैज टू मेक अ रिस्क असेसमेंट जो एंटिटी के रिलेशनशिप्स हैं और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, क्या वो ऐसी तो नहीं है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रिगर करती हों, और या एंटिटी के जो कंट्रोल्स या हैं या द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज वो किस हद तक रोबस्ट हैं. इन स्मॉलर एंटिटीज और मीडियम साइज एंटिटीज इनफैक्ट प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि दे आर generally no specific controls for identification of related parties. तो उस केस में ऑडिटर फर्स्टली तो आई बिलीव कि वो एक प्लानिंग स्टेज पे जो इनिशियल या लास्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे स्टार्ट होता है,
लेकिन इसके अलावा जो इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट हैं, जब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वी रिमेन अलर्ट to identify any undisclosed or previously unknown related parties. तो वहाँ पे because of the absence of controls or limited controls, the more focus of the auditor is to analyze the transactions that are happening and to consider to see कि इसमें कोई related party to identify नहीं होती. The important aspect is that auditor is not supposed to search for related parties, like it has to remain alert as far as identification of related parties is concerned. जो normally small and medium sized entities में जब हम audit देख रहे होते हैं तो I believe कि there are certain aspects जो कि हो सकते हैं. For example, कुछ हम रिलेटेड पार्टी लोन्स हो सकते हैं जो कि नॉर्मल टर्म्स पे नहीं होते. कुछ सर्विसेज रेंडर हो सकती हैं बाय दी ग्रुप कंपनीज और बाय दी family members to the related party, and then there could be sensitivity around the disclosures or identity of the business relationships or transactions. तो ये थोड़ा सा probably हमें small or medium size entities की on while auditing related parties ये चीजें देखने को मिल सकती हैं. लेकिन again the auditor has to perform procedures and ensure that the related party transactions और जो relationships हैं वो properly accounted for and disclosed हैं within the financial statements. So despite these problem areas, जिनको हम problem areas कह सकते हैं या key features कह सकते हैं या relevant features कह सकते हैं as far as SMEs are concerned, the auditor has to ensure कि the disclosures and the accounting is proper and appropriate. How to make risk assessment, because we have seen the risk assessment for related parties is relevant, and then the question is that how we can make this risk assessment. So as a 550 initially जो है हम अगर planning की बात करें तो planning stage पे यही require करता है कि we inquire the management about the identity and nature of the related parties. We also note down the type and purpose of related party transactions, and we also inquire management about the controls that if it has established for identification or accounting, disclosures, or authorization of related party transactions. So first bit is the inquiry of the management, and as I mentioned, if it's a recurring audit, probably the starting point would be the last year's work papers जहाँ से मेरे related parties की listing या relationships की details मिल रही होंगी, and then we will inquire the management about the transactions or the nature of related parties, or if there's any change within the related parties. The second aspect जो कि ISA require करता है to consider the fraud risk factors, because the related parties में जो एक risk होता है वो ये हो सकता है कि the override of controls, because of the relationship which the entities or individuals might have with the entity, there's a possibility of fraud or fraud risk. So इसको consider करना होगा. This doesn't mean that all the related party transactions या arrangements जो हैं वो उनमें fraud risk होगा या हो सकता है, लेकिन auditor has to consider this aspect specifically. जैसे for example अगर dominant influence है of an individual, the dominant influence की वजह से the individual has vetoed certain transactions or has or the transactions or arrangements entered by the entity are done only on the instructions of that particular individual, and the management is not in a position or does not generally question those or give a different view on those arrangements. So these are the few जो एक dominant influence की वजह से एक as an example fraud risk indicator हो सकता है. So auditor has to consider कि ये इससे कोई fraudulent financial reporting तो नहीं हो रही. Then because of this जो overall है, the purpose is to make a assessment about material misstatements. Auditor has to also consider that, and the ISA
550 also requires that the auditor has to remain alert to undisclosed related parties. So as I mentioned, that auditor is not required to search for related parties, लेकिन जहाँ तक है auditor की responsibility to carry out the audit with the professional skepticism, and for this the auditor has to remain alert to identify any undisclosed related parties or unidentified related parties, and the audit, the ISA requires it as besides other documentation that auditor might consider reviewing for this purpose. The auditor is required to consider or review bank confirmations, legal confirmations, minutes of meetings of shareholders or directors, to see if there's any unidentified or previously not known related party. So these are the few requirements as far as the risk assessment is concerned and how auditor can go about the risk assessment. Then what would be the focus of auditor while making the risk assessment? The first would be, as we know that we need to understand the nature, size, and complexity of the businesses, the family trees, the group structures, to help identify if there are any related parties, because जो related party में जो एक aspect हो सकता है वो complex structures का हो सकता है, complexity within transactions हो सकती है, तो auditor जो कि यानी एक indicator हो सकता है of fraudulent reporting, fraud risk. So auditor has to consider the nature, size, and complexity of related party relationships and transactions. Then the follow-up the indicators of the existence of undisclosed, as I mentioned कि कोई ऐसी indicators जो कि highlight करते हों कि there are undisclosed related parties, auditor has to remain alert, और उस सिलसिले में need to consider the documents that are available with the auditor for such aspects. और undisclosed related parties का जो एक possible fraud risk हो सकता है if auditor identifies the related party comes to the knowledge of the auditor which was not previously known. The auditor has to consider the undisclosed related party ka fraud risk. The auditor also has to consider qualitative aspects of materiality. So besides the quantitative aspects, the qualitative aspects, for example, the nature of relationship, has also to be considered while making the risk assessment, and the auditor's focus should not be on the quantum of volume of transactions, but also on the qualitative aspect. Then the auditor, as engagement auditor, has to also inform or apprise the audit team to remain alert. And lastly, the auditor can also discuss if the same entity, if the same firm is providing other services to the client from the for example, for within the audit firm as well, and within the client as well. So for example, if auditor needs to can discuss with the tech staff about the any related parties, or can have a discussion, can also have a discussion with the operation staff, etc. So auditor can discuss or inquire from the besides finance team or the relevant audit committee members, the other departments about any any related party. So these are the few areas which the auditor can consider while making the risk assessment and can focus on. The next would be the how to respond or how to consider the accuracy of the related parties, because the related party relationships and your nature have initially management would be providing that information. So अगर management ने वो information provide की है, then the auditor's responsibility is to consider कि ये जो information provide की गई है is accurate and complete. तो इस सिलसिले में auditor can review different documents to establish and to see कि कोई additional related parties नहीं है which are still unidentified. So जो completeness and accuracy होगी of the list या information होगी वो can be जो other evidence है उससे cross refer या उससे linkage हो सकती है. So for example minutes के साथ अगर हम review करते हैं
तो probably वहाँ से कुछ हमें एक evidence नजर आ सकता है, third party confirmation से, कोई और जो documents हैं, registers वगैरह से. So these are the few examples. इसी तरह if the entity has made investments, तो investments की जो details हैं, they can also provide some information or relevant information as far as the accuracy of the related party is concerned. So these are the few जो slide पे हैं और आइजा में भी हैं, few जो documents हैं which can be helpful for the auditor while considering the accuracy and completeness of the information provided by the management. There could be a situation जो कि आइजा में outlined है कि the auditor जो है comes across or identifies related parties which were not previously known. तो उस केस में आइजा provides guidance कि how the auditor is supposed to act. So firstly, the AISA outlines that the auditor should inform or communicate the engagement team about the newly identified related party, and the request the management to identify all transactions with the related party. So auditor जो है सबसे पहले management को भी approach करेगा और उसको बताएगा कि we have come across a related party and we need to see कि इसके साथ क्या transactions हुई हैं. And then auditor can also is required to ask management के why this specific party was not identified or listed in their information. Consider because ये intentional concealment भी हो सकती है by the management, so auditor has to consider this aspect कि what were the reasons कि related party जो है was not identified by the management, and for this auditor जो है वो consider ये भी करेगा कि intentional तो नहीं था इसको obscure करना इस information को, and if that's the case, so it can be a reason for fraudulent reporting by the management. So auditor has to remain alert on that area as well. इसी तरह जो undisclosed related parties कोई और भी हो सकती हैं, so auditor needs to be more skeptical और जो risk है उसका increase हो जाएगा, तो उसको auditor को सामने रखना होगा. And again, I would emphasize the auditor is not searching for the related parties, लेकिन this is the case where auditor while performing certain procedures, yes, for example, auditor was reviewing the shareholders minutes, तो वहाँ पे किसी party का जिक्र था and there was a discussion about the arrangement with the party. So auditor, for example, based on that information, identified कि ये एक related party है और इसके साथ कुछ arrangement भी हुआ है, लेकिन the information was not initially shared by the management. So this could be an example. There could be other examples as well. तो ये उस cases में फिर auditor की responsibilities जो हैं वो ISA 550 establish करता है. Then the auditor is also required to perform substantive procedures which would involve review of the documents, review of the transactions, उनकी verification. तो ये substantive procedures के through फिर auditor would be drawing comfort कि related party जो है उसकी transactions जो हैं वो appropriately accounted for or disclosed हैं. Then there could be a situation where the related party transactions are not in the normal course of the business. So normal course of the business की कुछ examples हो सकती हैं, जैसे जो एक transaction है with जो normally किसी और rate पे की जाती है with parties outside the group या outside related party relationship, लेकिन जो related party के साथ है वो specific terms के ऊपर की जाती है, जिसमें probably ये हो सकता है कि ज़्यादा discounts offer की जाती हों. इसी तरह और transactions भी हो सकती हैं where the funds are transferred from one entity to another. तो ये जहाँ पे there's specific terms because of nature of relationship, and those terms are not normally offered or available to other parties. So ये हो सकता है, and there could be reasons for such arrangements. The auditor's responsibility again is trigger when related party transactions outside normal course of business are identified. So if auditor has identified such transactions,
Then the ISA 550 outlines certain requirements. So एक तो ये है कि auditor has to inspect underlying contracts or any agreements to see the business rationale, um, the terms and of the arrangements. They are consistent with the management explanation. So if the auditor has discussed these transactions or these arrangements with the management, a review of the documentation would establish कि auditor की जो understanding management ने provide की auditor को is consistent with the documented with the documents or contracts. And the last bit would be that transactions are accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework. So the important thing is that for outside the normal course of the business transactions, the auditor has to inspect and review or study the underlying contracts and agreements. And this would help auditor in establishing के उसका business rationale जो management ने बताया वही था, वो appropriately और consistently terms जो हैं वो हैं, और lastly ये कि the accounting is as per the financial reporting framework. So for example, जैसे एक बहुत ही classical example हमें देखने को मिलती होगी वो ये कि जो below market rate loans offer किए जाते हैं या available किए जाते हैं, any entities may be providing or obtaining such loans from the related parties. So this is a classic example of outside normal course of business transaction. तो auditor को फिर उस सिलसिले में specific accounting भी देखनी होती है. And the another aspect that auditor has to consider कि appropriately authorized and approved है कि नहीं. In smaller entities और जो audit के perspective से अगर हम देखें, जब हम audit कर रहे होंगे तो ऐसा possibly हो सकता है कि कोई उस तरह की proper authorization या approval का हमें शायद documents में नजर ना आए. तो then the auditor has to inquire the management or जो review of the information जैसे कि as mentioned on the slide, और उसकी financial reporting की adequacy या appropriateness को देखना होगा. Then the जो normal course of business by transactions होती हैं and other transactions as well, तो उसमें auditor has to consider the information available to third party confirmations is also reconciling with the available information जो कि auditor के पास है. So that's also a source of evidence and additional information for the auditor. And related party जो balances हैं, इसमें important aspect probably ये होता है कि the collectability of the receivables को थोड़ा focus करना चाहिए और उसको ensure करना चाहिए कि the collectability of receivable from related parties as reported by the management is appropriate. Lastly, जो documentation है, we know कि ISA 230 जो है वो documentation की requirements को outline करता है या auditor की responsibilities को outline करता है. And the basic जो एक है उसकी premise वो यही है कि auditor has to make sure कि जो documentation है is good enough or is sufficient enough कि अगर कोई और individual इसको देखे तो उसको भी उस पूरे चीज की understanding हो जाए. So this is एक बहुत ही basics idea है of documentation. ISA जो 550 है वो require करता है कि name and nature of relationships with the related parties वो auditor को document करने हैं. This is one requirement that auditor specifically mentioned with the ISA 550. लेकिन अगर हम overall standard को देखें तो इसमें risk assessment की requirements भी हैं regarding related party relationships and transactions. And then इसमें further changes भी हो सकती हैं. So if we have identified additional related parties or relationships, तो ये changes भी document होती रहेंगी during the audit process. So the basic is that all the work that has been done on related parties by the auditor, whether it's inquiry, whether it's discussion with the management, whether it's discussion within the team, whether there's any communication regarding the newly identified related parties, all that has to be documented. And the documentation, as we know, would be helpful for the subsequent periods audits as well. Lastly, this is the last bit of the related party
audit of the related parties पे, that's the completion reporting aspect है. Completion में, firstly, auditor has to ensure that the accounting and disclosures of related parties and there is in accordance with the financial reporting framework. So I'm basing this on the generally जो हम statutory audit से कोई और audits करते हैं, which are based on some financial reporting frameworks. So for example, IFRS या IFRS SMEs or in fact जो small size entities के लिए specific standard है, तो जब हम उसको apply कर रहे हो, तो auditor has to ensure कि जो disclosures हैं are appropriate in accordance with the specific or applicable framework. Second is the auditor is also required to consider communicating significant matters in connection with the related parties. तो इस सिलसिले में those charged with governance से auditor की जो communication होती है, normally मैंने जो मेरा experience रहा है working with the firm, so एक covering letter या board of directors को letter address किया जाता है along with the financial statements. So उसमें significant matters में auditor can communicate, or if there is another जो भी communication का board है for the auditors, तो वो उसके through related party से relevant significant जो matters हैं वो communicate कर सकता है. So an example could be if the auditor has identified during the course of the audit अगर उसको undisclosed related parties मिलती हैं, the auditor can communicate this information with those charged with governance. And इसी तरह अगर कोई there was a disagreement which was subsequently resolved, लेकिन disagreement ऐसा था कि the auditor considers with the management था regarding the specific accounting or disclosure of related parties, the auditor can consider communicating this information to those charged with governance. So there were a couple of examples. There could be others as well. Lastly, the auditor is required to obtain written representations, and the auditor shall obtain written representation at least on two areas. Others जो भी है वो enhance भी improve इसको further extend भी किया जा सकता है on specific related party features. So one is that management has to represent in writing that it has identified, disclosed the identity of all related party relationships and transactions of which they were aware. So management has to give a written representation on this aspect. And the second जो ISA 550 require करता है कि auditor has to obtain कि जी management ने जो accounting की है and reporting की है, disclosures provide की है within financial statements, वो are appropriate in accordance with the financial reporting framework that was applicable on the entity. So management has to represent on these two areas as far as the related party disclosures are concerned. These are specific जो representations है, and as I mentioned there could be others जो कि auditor specifically require कर सकता है from the management regarding related parties or related party relationships and transactions. Lastly, the auditor अगर consider करता है कि related parties से related जो information है वो he is not able to obtain sufficient information, so it can impact on the auditor's report. Similarly, अगर financial statements में जो disclosures हैं, the auditor has obtained the information, लेकिन financial statements में जो disclosures हैं, accounting is not appropriate, so this can also result in the modification of the auditor's report. So auditor has to consider these two aspects जब वो अपनी report को issue कर रहा हो या opinion को finalize कर रहा हो. So if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, तो again depend करेगा कि कितना material pervasive है, and the auditor would be going for can go for qualified or disclaimer of opinion based on the circumstances. And if the financial reporting may there's inappropriate financial reporting or disclosure, then the auditor can go for qualified or adverse opinion. So वो auditor को evaluate करना होगा और judge करना होगा based on the specific circumstances. तो ये was a brief summary of the financial reporting and audit related requirements around related party relationships and transactions. Again, at the end, जैसे जिक्र किया था, IFRS standards IAS 24 है, इसी तरह मैंने representation दी IAS 24 focus था. Companies Act में भी disclosure requirements हैं which we would be going to have a look in the coming
जो सेशन है ISB हैंडबुक में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, देन देयर इज अ गाइड ऑन ISAs for in the audits of small and medium sized entities. ये IFAC ने इशू की है and it's also available on ICAP's website. So I believe आपके ने देखने का मौका मिला होगा, and if you didn't get a chance, so it's a relevant document and could be helpful for the audits of smaller or medium sized entities. So this can the guide can also be seen or can be downloaded from the ICAP website. So thank you very much. Thank you. जी महर, Sohail, I believe we have some Zoom questions. Sir, I think we have some Zoom questions. You can take that and afterwards we go for the audience. ठीक है. जी I will take few minutes. मैं जरा पढ़ लूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. एक मिनट, पहले वो Zoom के questions ले लें, उसके बाद से. महर, I would suggest कि पहले वो कर लें और फिर मैं in the meanwhile साथ साथ Zoom के देखता रहूँगा, क्योंकि I need some time to study or read the questions. पहले audience से ले लें हम लोग questions. जी I think कि वो बेहतर रहेगा. ठीक है सर, audience. जी सर, मेरा नाम नासिर महमूद है. एक असल में क्वेश्चन इस हवाले से है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो ये लिखा हुआ है क्लोज रिलेटिव का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. अच्छा, अब इसके अंदर बाज जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अंदर जैसे डायरेक्टर तो खुद तो जो है वो रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन जो अदर उनके जो रिलेटिव्स हैं जो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो क्या उनके साथ जो लोन या इस टाइप की कोई अगर ट्रांजेक्शन होती है तो क्या हम उसको जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर लेंगे? क्योंकि एक सवाल ये है, और एक और सवाल ये है कि बाज़ जो ग्रुप कंपनीज हैं फंड बैंक्स वगैरह से लोन लेती हैं, तो जब चार्ज रजिस्टर करवाती हैं तो वो अपनी सेफ्टी के पर्पस के लिए वो तीनों या चार जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं उनके एसेट्स को भी ले लेती हैं. तो क्या ये ट्रांजेक्शन जो है जो ग्रुप कंपनीज एक के एसेट भी बीच में इन्वॉल्व हैं, दूसरी कंपनी के भी एसेट इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये ट्रांजेक्शन ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी और इसको यानी मनी वैल्यू के अंदर कैसे जो से किस्म का देखें? जी फर्स्टली आपने थैंक यू फर्स्टली आपने रिलेटेड पार्टी में क्लोज रिलेटिव, आई थिंक आप सेक्शन 208 को रेफर कर रहे थे. सेक्शन 208 में यस एक्सपेंडेड डेफिनेशन है और ऑफ रिलेटेड पार्टीज, लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट एज फार एज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न्ड वी हैव टू गो अलोंग विद IAS 24. सो IAS 24 की जो definition of related party and the extent of related party में जहाँ पे individual के या person की relationships हैं, तो वहाँ तक we have to go for the related party disclosures or accounting. तो ये एक तो ये अंडरस्टैंडिंग है on the related party की जो extent है. Secondly आपने जिक्र किया कि जो अगर ग्रुप एक कंपनी है एंड उसमें उसके और ग्रुप में और कंपनीज भी हैं, तो उन कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया गया है इन अ पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है, और उसमें उसके उन कंपनीज के एसेट्स को भी फाइनेंसिंग के लिए प्लेज कर दिया गया. सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर या ग्रुप, तो उन एंटिटीज के एसेट्स जो हैं वो भी प्लेज्ड हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल जो अरेंजमेंट हुआ है. तो कंसिडरिंग दिस माय अंडरस्टैंडिंग वुड बी कि ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से एक ट्रांजैक्शन हुई है और वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेकिन सर उसको मनी वैल्यू के अंदर कैसे हम जो है दिखाएंगे? क्योंकि इसलिए कि ज़ाहिर है एक पार्टी जिसका मैं ऑडिटर हूँ, वो जो दो हैं मैं उनका ऑडिटर नहीं हूँ,
तो अगर फर्स्ट क्योंकि इसके अंदर तो तीनों के एसेट्स इन्वॉल्व हैं लोन की फंडिंग के अंदर, ठीक है। तो तो वो मुझे जी जी, उसको थोड़ा सा हाँ, आपसे। वो जो जो लोन है, वो अगर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वो एक पार्टी ने अवेल किया, ये वो एक पार्टी को अवेलेबल होगा, करेक्ट? अच्छा, इसको मैं क्लियर कर दूं कि जी जी। लोन हर एक ने अलग अलग लिया हुआ है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो उनसे किस्म का जो एसेट ऑफर किए गए हैं उस लोन को सिक्योर करने के लिए, तो वो ठीक है। हर एक ने जो वो सबके कॉमन है। वो असल में बैंक अपनी फैसिलिटी उसके हवाले से उसने ये बार किया है, लेकिन एज ए ऑडिटर जो उनसे किस्म का, मैं इसको थोड़ा सा इस हवाले से उस स्पेसिफिक कंपनी जिसका मैं ऑडिट करता हूँ, तो जी, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि उसको हम कैसे जो उनसे किस्म का बेहतर तौर पे। राइट। तो बिल्कुल ठीक है। जो इस अरेंजमेंट की मुझे समझ आती है, जो ये कि जो लोन है वो तो एक अवेल हो गया, या जो भी उसकी लिमिट होगी स्पेसिफिक टू वन पार्टी, आपने जैसे जिक्र किया। जो एसेट्स प्लाइड हैं, दे आर यानी डिफरेंट पार्टीज के साथ हैं। तो जो फॉर एग्जांपल जिस कंपनी ए है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, या एक कंपनी बी है जिसके एसेट्स भी इस फैसिलिटी के साथ जो आपको अवेलेबल है उसके साथ लिंक्ड हैं। तो इफ दैट्स द केस एंड इफ दैट्स एस्टैब्लिश्ड, तो देन तो जो एंटिटी बी है वो उसने भी एक तरह से आपके लिए अपने एसेट्स को अवेलेबल किए, आपका मतलब कंपनी ए के लिए। सो आई विल जी, उस केस में फिर आई बिलीव कि जो डिस्क्लोजर है वो रिक्वायर्ड होगा कि जी कंपनी ए, यानी एज ए हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह का हो सकता है कि जी लोन इतना है, कंपनी ए ने अपने एसेट्स भी ऑफर किए हैं, और इस अरेंजमेंट में इस लोन के लिए जो अवेलेबल किया गया है टू द कंपनी ए, ग्रुप कंपनीज ने भी अपने एसेट्स को प्लेज किया है। तो तो मुझे बेसिकली यह है अनफंडेड जो है वो जी, जो हाँ जी, प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो। या सर बोरोवर और लेंडर का रिलेशनशिप को हम कहेंगे कि वो आरपी रिलेशनशिप है व्हेन द अमाउंट इज सब्सटेंशियल और टर्म्स भी एबनॉर्मल हो लोन की। जी नहीं, अगर बोरोवर लेंडर का, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ बैंक एंड इट हैज ऑफर्ड अ फैसिलिटी टू अ स्पेसिफिक कस्टमर या क्लाइंट, और ये टर्म्स हैं वो और नॉट एज पर मार्केट टर्म्स, थोड़ी डिस्काउंटेड हैं या लोअर देन मार्केट है, तो सिंपली इस अरेंजमेंट की वजह से इट वुड नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी, द एंटिटीज वुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी। Any other participant question is there? All right. Sir, we can take Zoom questions then. जी, one question is that SECP has, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि has issued regulations, एक है सेक्शन 208 जो कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, और उसमें कंपनी हैज टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन और इंश्योर के रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द कंपनीज। और इसी सेक्शन के अंदर फिर SECP ने रेगुलेशन इशू की हैं विच आर नेम्ड एज रिलेटेड कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड्स रेगुलेशंस 2018। तो उस सिलसिले में उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि उसमें जो कंपनी सेक्रेटरी है वो भी रिलेटेड पार्टीज में शामिल किया गया है, और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो नॉर्मली फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या उन पॉलिसीज में या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वेदर जो कंपनी सेक्रेटरी की रेम्यूनरेशन है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो माय अंडरस्टैंडिंग एज आई मेंशन अर्लियर कि रिलेटेड पार्टीज की हद तक जो है वो आईएसओ 24 को फॉलो करना है एज फार एज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय द कंपनीज इज कंसर्न। हाउएवर अगर कंपनीज ने अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो देन इट वुड बी मोर एक्सपेंडेड जो रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑफ फॉर ऑफ सेक्शन 208 और इन रेगुलेशंस को देखना होगा। सो कंपनी सेक्रेटरी जो आइजा की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि की मैनेजमेंट पर्सनल कौन होते हैं। तो की मैनेजमेंट पर्सनल वो होते हैं कि जो ऑपरेशनल फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जनरली डायरेक्टर्स या अदर जो की पोजीशंस होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो एक तो ये है, तो इस क्राइटेरिया को सामने रखना होगा।
So I will not comment कि company secretary की आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये evaluate करना होगा, इस तरह इसको देखना होगा. Second aspect जो है वो इसमें disclosure requirements of fourth और fifth schedule को भी देखना होगा, क्योंकि disclosure requirements in addition to IS-24 जो फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल के हैं, तो वहाँ वो एग्जीक्यूटिव्स की भी डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है ऑफ रेम्यूनरेशन और सर्टेन अदर परक्विजिट्स जो हैं वो उसका. तो डिस्क्लोज और एग्जीक्यूटिव्स को उसने एक रूल बेस्ड थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि आई रिकॉल की शायद बेसिक सैलरी जो है वो 12 लाख से ज़्यादा हो, 12 लाख हो तो या उससे ज़्यादा हो तो इज एन एग्जीक्यूटिव. सो उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. एंड probably हो सकता है कि company secretary is an executive in certain companies. जी, next मैं let me read next one. जी, the question is that a company has certain non-arm length basis जो transactions हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स को कंपनी ने प्रॉपरली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज किया है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द क्वेश्चन इज कि इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्या आईसा 24 कुछ रिक्वायर करता है, आईसा 24 की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है, और इसी तरह आई से 550 की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं. जी, नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस पे अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो आईएस 24 जो है वो एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रिक्वायर करता या आउटलाइन नहीं करता कि इनकी कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स होने चाहिए. हाउएवर वो ये कहता है कि जो जो इन एडिशन टू आईएस 24 कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है विद इन द जुरिस्डिक्शन, जैसे कि कंपनीज एक्ट में है कि अगर नॉन आर्म्स ट्रांजेक्शंस हो रही हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये हो सकता है. As far as ISA 550 is concerned, तो ISA 550 non-arms length का जैसे मैंने जिक्र किया था कि अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर ट्रांजेक्शंस नहीं हो रही तो उस सिलसिले में कुछ रिक्वायरमेंट्स स्पेल आउट करता है, और अंडर दोज रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर हैज टू कंसिडर दी डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट्स जो हैं अवेलेबल उन ट्रांजेक्शन से रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ द ट्रांजेक्शन, द इंफॉर्मेशन to reconcile the information provided by the management for that specific transaction or transactions with the arrangement. और इसी तरह auditor has also is required to ensure कि financial reporting और accounting of transactions की appropriately हुई है कि नहीं हुई. तो ये ISA 550 की जो नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शंस हैं उन या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजेक्शंस हैं तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं. द इम्पोर्टेंट फैक्टर अगेन इज कि जहाँ जैसे इन्होंने अपने क्वेश्चन में भी मेंशन किया कि एंटिटी ने उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके अकाउंट फॉर किया हुआ है, सो ऑडिटर का जो काम है वो इससे आगे स्टार्ट होगा, और ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर अदर नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शंस. जी, थैंक यू. आई थिंक हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं. जी, महर आपको आवाज आ रही है? जी सर. जी, सो बिकॉज हमने नेक्स्ट सेशन को भी वाइंड अप करना है, तो आई थिंक हम उसकी तरफ चलते हैं. आई हैव shared the slide deck, or we are going to have a look on the fourth and fifth schedules. I believe कि आप सब लोगों ने देखा हुआ है, and we are just going to have a refresher. और इसमें the idea is कि हम जो है just हम ये है कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरा उनको रिविजिट कर लें, एंड वी कैन आल्सो while revisiting the disclosure requirements of the fourth and fifth schedules, तो हम उसको ये भी देख लें कि इनमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फोर्थ स्केड्यूल में है, बिकॉज फिफ्थ स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट्स आर लेसर कंपेयर टू फोर्थ स्केड्यूल. सो वी कैन आल्सो एनालाइज के जो फोर्थ स्केड्यूल है
उसकी requirements कितनी extensive हैं compared to fifth schedule. So starting with the scope, we know that the fourth schedule जो है is provided within the Companies Act, and the certain entities are required to follow the disclosure requirements of the fourth schedule. Similarly, fifth schedule जो है वो भी this financial statements, financial reporting disclosures requirements को outline करता है. So starting with the fourth schedule, जो fourth schedule का scope या applicability है, that's on the listed companies and their subsidiaries. So if there's a listed company and it has subsidiaries and the subsidiaries are private companies, as an example, still they will be required to follow the fourth schedule disclosure requirements. Fifth schedule की जो disclosure requirements हैं वो non-listed companies पे हैं और उनकी subsidiaries पे हैं, foreign companies पे हैं, companies registered under section 42 or section 45 जो कि normally NPOs जो registered with SECP होती हैं under these sections. तो जो फिफ्थ स्केड्यूल की अगर हम थर्ड स्केड्यूल पे एनालिसिस करें अलॉन्ग विद दी जो प्रीएम्बल या स्कोप एप्लीकेबिलिटी है ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हमें नजर आता है कि इनकी एप्लीकेशन इस तरह होती है. एंड अनदर की एस्पेक्ट जो कि आउटलाइन है, ये एक्सप्लेन है विद द स्केड्यूल्स, is that the disclosure requirements are in addition to the requirements that have been or that are required within the IFRS or IFRS or SEMIs or other standard that could be applicable on the entities. So these are the additional requirements. Just a brief comment on the scope के जब companies ordinance था तो कुछ ऐसी requirements थी जो कि repetitive थी from the financial reporting framework से ही, और कुछ ऐसी थी couple of जो कि conflict में थी because of the certain जो specific standard था of section था of the Companies Act. So जब Companies Ordinance, sorry, so जब Companies Act in 2017 आया तो ये कोशिश की गई from the regulator side, और उसमें ICAP also played a role, और in schedules को थोड़ा revise भी किया गया था subsequently to ensure कि जी जो requirements हैं are not repeating within the fourth and fifth schedule. Rather, अगर कोई regulator ने require करनी है तो वो additional requirements outline करे within these schedules. So these are the additional requirements. जो fourth schedule है starts with the इसमें अगर हम देखें तो 4 sections या areas हो सकते हैं schedules के अंदर. Number 1 is the definition. Number 2 is general requirements of certain disclosures. So general disclosures, and they are not relevant to specific items or areas. And the other 2 areas जो कि या sections हो सकते हैं for our understanding वो balance sheet or statement of financial position disclosures हैं, and statement of profit and loss disclosures हैं. So these are the 4 जो हम इस fourth or fifth schedule में हैं. जहाँ तक definitions हैं तो there are few definitions. Capital reserve को define या उस तरह mention किया गया है, and then the executive जो हम इससे पहले presentation में हमने थोड़ा सा जिक्र किया, तो executive को बताया गया है कि कौन executive होते हैं. तो वो besides chief executive and director जो जिनकी 12 लाख से ज़्यादा बेसिक सैलरी हो. फिफ्थ स्केड्यूल में ये अगर हम देखेंगे तो अगर हम कंपैरेटिव देख रहे हो तो ये डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन फिफ्थ स्केड्यूल आउटलाइंस के जो डेफिनेशंस वहाँ प्रोवाइड की हैं विद इन द फोर्थ स्केड्यूल, दे आर आल्सो एप्लीकेबल एंड रेलेवेंट फॉर द फिफ्थ स्केड्यूल. इसके अलावा अनदर की एलिमेंट विद इन दिस इज दैट जो डेफिनेशंस यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई, द डेफिनेशंस of IFRS would be applicable. So fourth schedule ये भी outline करता है principle की definitions or explanations which are not provided within the IFRS within the Companies Act. तो उनकी जो explanation होगी वो या definitions होगी वो IFRS की use की जाएंगी in terms of fourth schedule. General disclosures में general information about the company, this is the first जो disclosure है requirement of the fourth schedule, जिसमें company की general information
है वो प्रोवाइड करनी है, जिसमें जियोग्राफिकेशन है, एड्रेस ऑफ द बिजनेस यूनिट्स है, पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट्स है, कैपेसिटी, उसकी एक्चुअल कैपेसिटी एंड द रीजन फॉर less than actual capacity during the year, number of employees at the reporting date and average number of employees during the period, names of the associated companies and related parties with whom the company had entered into transactions during the year, और उनकी relationship percentage of shareholding बतानी है इस disclosure के अंदर, and a detailed description of any stay order obtained against investigation, अगर company के against कोई investigation हो रही है from SECP, तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर कंपनी ने लिया है, तो कंपनी हैज टू डिस्क्लोज और प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन within financial statements. And when we look at the fifth schedule, तो जो number 2 which is the immovable fixed assets की डिटेल है, और जो SECP ने अगर कोई प्रोसीडिंग्स कर रहा है और उससे स्टे कंपनी हैज ऑब्टेन, तो ये 2 डिस्क्लोजर्स जो है वो फिफ्थ स्केड्यूल में रिक्वायर करता है, लेकिन जो बाकी डिस्क्लोजर्स हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ये ग्राफिकल लोकेशन की डिटेल है, ये कैपेसिटी रिलेटेड या एसोसिएटेड कंपनी है और पार्टीज की जो है वो स्पेल्ड आउट है विद इन द फिफ्थ स्केड्यूल एज वेल. This is a illustrative disclosure जो कि particulars of immovable assets of the company का है, इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन का भी है, एंड जैसे E2 में हम प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन को देख रहे हैं, तो देयर शैल बी अनदर इसमें जो है कि रीजन फॉर लेस देन जो maximum एक्चुअल प्रोडक्शन इज, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द maximum प्रोडक्शन, then entity is also required to give a reason or explanation for the lower production. So ये illustrative disclosure है. मैं slide जो deck है वो सबके साथ share भी होगा. The team would be emailing across this presentation and the last presentation as well. And I believe it would also be uploaded on the ICAP website, तो आप उससे भी देख सकते हैं. इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का ये डिस्क्लोजर है, illustrative disclosure, total number of employees and average number of employees during the year. Another disclosure requirement of the fifth schedule is कि अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी कंपनी की जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, उसकी कोई एसोसिएट सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर्स और होल्डिंग कंपनीज जो है वो अगर आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, सो दे आर बेसिकली फॉरेन कंपनीज, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है उनके साथ और वो आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड हैं, तो एंटिटी हैज टू और उनके साथ अरेंजमेंट्स और ट्रांजैक्शन भी हुई हैं, तो एंटिटी हैज टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट दोज एंटिटीज, जो कि उसकी होल्डिंग हो सकती है या सब्सिडरी हो सकती है या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो सकती है. तो उस सिलसिले में नेम ऑफ जो कंपनी है वो बताना है. सो कंपनी लेट्स से एसोसिएट है तो उसका नाम, उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे है, उसकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन यानी रिलेशनशिप क्या है विद कंपनी. सो अगर एसोसिएट है तो रीजन होगा कि ये एसोसिएट है, इस तरह का बताना होगा, और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इफ देयर इज एनी शेयर होल्डिंग विद इन दैट कंपनी. जहां तक फिफ्थ स्केड्यूल है, तो फिफ्थ स्केड्यूल रिक्वायर्स this disclosure, लेकिन the extent of disclosure is limited and the entity is only required to report or provide disclosure of the name of the undertaking and country of incorporation under the fifth schedule. This is again एक illustrative example है जिसमें एक एसोसिएट की जो कि फॉरेन एसोसिएट है उसके से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बाय द एंटिटी. तो इसमें एसोसिएट का नाम, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, एसोसिएट का जो रिलेशनशिप है यानी या द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड द फॉरेन एंटिटी को एसोसिएट का है, तो वो मेंशन किया गया है. देन अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज का डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है fourth schedule. So if entity has any unavailed credit facility at the year end, so entity has to report or disclose that information. लेकिन fifth schedule जो है ये unavailed credit facilities का जो disclosure है is not required in the fifth schedule.
utilization of proceeds, जो disclosure of utilization of proceeds obtained through issuance of securities, अगर कोई securities या shares वगैरह issue किए हैं या debt instruments issue किए हैं और उनकी utilization कैसे हुई है उन proceeds की, तो fourth schedule में the entity is required to provide information about the utilization of the proceeds that it obtained. So अगर इसने कोई shares issue किए और उसकी utilization, for example, कोई अपनी एक्सपेंशन की, बिजनेस लाइन की, या कोई प्लांट लगाया या कुछ उससे कोई एसेट्स एक्वायर किए या कुछ और किया, तो वो एंटिटी हैज टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन. एंड फिफ्थ शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर this specific required disclosure. Loan, advance, investment in foreign companies. So if the company has given loans or advances or made investments in the foreign companies, तो उस केस में फिर जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जो कि यहाँ पे लिस्टेड डाउन है. सो ये फॉरेन कंपनीज हैं, दे कुड बी रिलेटेड पार्टीज, दे बट दे could be other than related parties. So any loan advance given or investment made in the foreign company. So if, for example, if company has made investment, as an example, in Google, so company has to disclose information about Google, जो कि इसमें से जो रेलेवेंट होगी. इसी तरह अगर कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को लोन दिया है, तो फिर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये वाली उस पर भी एप्लीकेबल होगी, जो रेलेवेंट है. इसी तरह जो फिफ्थ स्केड्यूल है, तो फिफ्थ स्केड्यूल में भी फॉरेन कंपनीज को अगर कोई लोन, एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उसमें, तो रिक्वायर करता है, लेकिन वहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इज वेरी लिमिटेड एंड only the name of the foreign company along with its jurisdiction is required in the fifth schedule. Export sales se related, if there is any outstanding balance at the year end, so usme name of the company in case of related party, if it's a related party, to us company ka naam batana hai jisse wo outstanding jo balance hai is due. And the amount due is in context of on an account of export sales. तो उस सिलसिले में ये फिर disclosure required होगा. So company has to disclose the name of the company जिससे amount due है, and if there is any defaulting party, तो उन defaulting parties का भी details देनी होंगी, जिन्होंने अपनी overdue जिनसे amount हो रही है at the year end. So name and relationship, if any. So irrespective of any relationship, which means related or unrelated, the information about the name and amount of defaulting amount from such parties has to be disclosed. Fifth schedule does not require this disclosure. Sharia compliant companies. Again, कुछ शरिया compliant companies हो सकती हैं या companies listed on Islamic index हो सकती हैं, as per PSX जो index है. तो उस सिलसिले में SECP ने कुछ companies act के अंदर कुछ requirements outline की हैं, जिसमें इन company अगर कुछ शरिया compliant companies हैं और या जो Islamic index पे listed हैं companies, तो उनको ये डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें लोन्स, एडवांसेस ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक मोड, उनकी बैंक में अगर कुछ शरिया गवर्नमेंट बैंक में उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, प्रॉफिट कितना अर्न किया है, वगैरह वगैरह, और रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लायंट बैंक्स. सॉरी, एंड द फिफ्थ स्केड्यूल जो है वो ये डिस्क्लोजर फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के शरिया कंप्लायंट डिस्क्लोजर्स कैसे हो सकते हैं, किस हद तक रेलेवेंट हो सकते हैं. So again, you can have a look when we share the presentation. Next, अब specific जो disclosures हैं of statement of financial position within the fourth schedule जो required है कि balance sheet में या financial position में कौन से specific disclosures provide करने हैं, and we will be also having a comparative look on the fifth schedule
कि उसमें क्या फाइनेंशियल बैलेंस शीट रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं. द फर्स्ट वन इज कि जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसमें वी हैव टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक डिस्क्लोज बल्कि प्रेजेंट करने हैं ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट और बैलेंस शीट सर्टेन लाइन आइटम्स. एंड द फिफ्थ स्केड्यूल हैज आउटलाइंड या लिस्टेड डाउन कि कौन से वो लाइन आइटम्स हैं, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, अनपेड डिविडेंड है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, एंड कैश इन बैंक बैलेंसेस. सो दीज हैव टू बी स्पेसिफिकली presented on the face of the balance sheet. और सिमिलरली जो फिफ्थ स्केड्यूल है वो भी यही रिक्वायर करता है कि ये जो लाइन आइटम्स हैं इनको अलग से मेंशन करना है या प्रेजेंट करना है ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. तो ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो पहले ये मेंशन की मैंने, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन की जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. इफ वी लुक इनटू आईएफआरएस, तो आईएस 1 में है और उसमें वो प्रेजेंटेशन की ऑफ आइटम्स या लाइन आइटम्स गाइडेंस प्रोवाइड करता है. तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स या रिवैल्यूएशन सरप्लस को स्पेसिफिकली एज सच रिक्वायर नहीं करता. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कंपनीज ने फिफ्थ स्केड्यूल या फोर्थ स्केड्यूल के अंदर इंश्योर करनी होती है. Fixed assets से related जो disclosures हैं, so firstly the company has to provide information कि अगर उसने कोई अपने funds utilize किए, कोई asset को acquire किया है, लेकिन as at the reporting date the particular asset is not in the possession or in the name of the company, so the entity has to provide information about the specific aspect. और उस सिलसिले में the company is required to explain the reasons and the description and the value of the asset and the person or in whose name or possession the asset is at the balance sheet date. इसी तरह the company is also required to disclose जो separate है freehold land and leasehold land. तो इनकी जो classification या presentation है in the notes to the financial statements, वो generally land and building की land में फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड को सेपरेट करना है, और बिल्डिंग में इसी तरह फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड लैंड को भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. Where the company has carried out revaluation of fixed assets or has measured investment property at fair value, तो वहाँ पे forced sale value shall be disclosed. इस तरह disposal of fixed assets की भी certain requirement है कि अगर disposal of fixed assets होता है तो उसमें there is a threshold कि अगर बुक वैल्यू जो है ऑफ एसेट्स डिस्पोज 5 मिलियन है, तो उस केस में फिर ये डिस्क्लोजर ट्रिगर होता है. सो इफ द कंपनी हैज डिस्पोज्ड लेट्स से 5 आइटम्स और उनकी एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ 5 आइटम इज मोर देन 5 मिलियन, तो देन द कंपनी हैज टू कंसीडर दिस डिस्क्लोजर. और उसमें फिर उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना होगा ऑफ आइटम्स व्हिच हैड बुक वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख, सो उनका फिर सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा. लेकिन ये ट्रिगर उस केस में होगा कि अगर एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज्ड फिक्स एसेट्स जो है वो एक्सीड्स 5 मिलियन. यही रिक्वायरमेंट्स जो है एज फार एज द फिक्स एसेट्स आर कंसर्न आर प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड अंडर द फिफ्थ स्केड्यूल. Again, this is an illustrative of the requirements. जी, फिर ये है कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर डायरेक्टर्स को भी दिए गए हैं, सो इफ द कंपनी हैज गिवन लोन्स और एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, तो द पर्पस फॉर व्हिच द लोन्स और एडवांसेस वर गिवन, तो दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, एंड अ मूवमेंट और रिकंसिलिएशन बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर. सो कितनी ओपनिंग था, कितना पे हुआ, कितना उसमें से वापस रीइंबर्स या रिकवर हो गया है on the closing balance. So for directors, जो है ये एक specific disclosure है when the company has provided loans or advances to the directors, and the same requirement is also provided in the fifth schedule.
So this is again an illustrative disclosure जिसमें कंपनी ने एक स्पेसिफिक जो है वो पॉलिसी रखी हुई है कि हम इस केस में या इस नौयत के लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं और उसका डिस्क्लोजर है and then there is a reconciliation of the carrying amounts at the beginning and end of the year. This is जो कि क्वेश्चन भी आया था during last presentation के where the company has given loans and advances or has obtained loans and advances at the terms which are not arm's length, तो उसमें उसकी जो है फिर reason देनी होगी company को कि what's the reason for obtaining or providing such loans and advances, and the similar disclosure is also required in the fifth schedule. Long-term loans and advances to associate and related parties. तो इस सिलसिले में जहाँ associates and related parties को अगर कोई loans and advances दिए गए हैं तो there are certain requirements जो कि name of the entity बताना होगा, terms of the loans, collateral अगर कोई है कि नहीं है, ये किस extent तक है, aggregate amount outstanding at any time during the year, then the provisions against the specific loans and advances and any expense, any charge जो है, or we can say the debts or the loans and advances that was written off, वो disclose करना होगा. So the loans and advances to associate and related parties का specific disclosure है यहाँ पे हमें उनकी besides name and terms and collateral, we also need to disclose certain quantitative जो aspects हैं वो भी disclose करने हैं, and the same requirement or disclosure is also provided in the fifth schedule. जी करंट एसेट्स में व्हेन वी सी द फोर्थ स्केड्यूल, तो करंट एसेट्स से रेलेवेंट जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है वो डेट्स एंड रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज है. तो नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी बताना है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जो आइदर पास्ट ड्यू इम्पेयर्ड है अलोंग विद एज एनालिसिस, ये एक रिक्वायरमेंट है which is also required within हम IFRS में देखें तो हम ये debts written off as irrecoverable provisions for doubtful debts, or lastly if the entity has reversed any provision तो उस provision की reversal की explanation भी देनी होगी. And again fifth schedule जो है वो debts and receivables from associates and related parties जो है which are current, तो उनकी similar disclosure requirements prescribe करता है. So इसमें जैसे gross amount है, past due amount है, if there is any provision, reversal of provision, तो ये इस तरह का इसमें जो relevant होगा the company can provide, and lastly the company is also required to provide an explanation for the reversal of provision if there is any. Loans and advances other than those to employees or suppliers, so or if those loans and advances are in excess of 1 million, तो यानी specific जो loan or advance exceeds 1 million, तो उस specific loan and advance में the entity has to provide information about name of the borrower जिसको दिया गया है, terms of repayment and particulars of the collateral or security. So if the entity has given loans and advances to normally जो किसी सप्लायर या एम्प्लॉय को जनरली दिया जाता है वो बिजनेस रिलेटेड दिया जाता है, तो अगर उसके अलावा किसी भी रीजन की वजह से दिया है और उस लोन या एडवांस की अमाउंट जो है 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो देन ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. और प्रोविजन मेड फॉर जो बैड और डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस हैं शैल बी शोन. तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है कि जो भी अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड कोई भी loan and advance है, चाहे employee का है, supplier का है, किसी और का है, if the entity has made a provision, so that has to be disclosed separately within the notes, and it would be reflected as a deduction from the gross amount. The fifth schedule only requires a second
disclosure, that is the provision about made for doubtful debts, loans and advances, और उनकी जो separate presentation है वो 5th schedule require करता है. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से रेलेवेंट जो है 4th schedule जो है ये रिक्वायर करता है कि जो इशूड शेयर कैपिटल है उसकी सेपरेट डिस्क्लोजर्स हो. फॉर एग्जांपल सेपरेट का मतलब ये है कि इफ शेयर्स हैव बीन इशूड एज बोनस, वो सेपरेट लाइन आइटम के तौर पर डिस्क्लोज हो within the notes or within statements in equity as well. The shares allotted for consideration paid in cash, shares allotted for other than cash, shares allotted as bonus shares and treasury shares, तो इनकी separate line items में disclosure हो within notes. If there are any agreements जो कि specific हैं which could be relevant for the users of financial statements, so for example अगर voting rights से related हैं, board की selection से related हैं, rights of first refusal है, ये block voting के हैं, तो वो जो arrangements हैं उनका भी specific disclosure 4th schedule require करता है. The discount on issue of shares, if the company has issued shares on a discount, तो इसकी जो डिडक्शन है वो स्पेसिफिकली अलहदा से होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन अलहदा से होनी चाहिए. सो ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू reflect this amount, which is the shares issued at discount, as a deduction from the issued share capital. So entity has to disclose this on the face of the balance sheet as well as in the statement of changes in equity, and to arrive at the net जो issued share capital का balance है उसपे. The above disclosures जो हैं, जो share capital की bifurcation कह रहे हैं issued share capital की, because of the nature of the issuance, उसके basis पे similarly जो shareholder arrangements है and discount on issue of shares, all these are also required under the 4th schedule. The 4th schedule also outlines कि the capital and revenue reserves जो हैं वो clearly distinguished हो, which means कि जो उनकी अलहदा से disclosure ho, and if there are certain reserves within, for example revenue reserve जो कि further उसकी है, तो can also be disclosed as within the revenue reserves and similarly within the capital reserves, but the capital reserves and revenue reserves have to be clearly distinguished. So this is a general requirement, and the disclosure should also be provided if there is any restriction because of the legal जो aspects हैं, or because of other restrictions, for example share agreements की वजह से या किसी वजह से on distribution of certain reserves. तो अगर कोई reserve है, which distribution of reserve generally revenue reserve होगा, यानी हम अगर definition को देखें तो अगर revenue reserve की distribution की कोई restriction है, तो has to be disclosed. And the same disclosures are also required if the company is preparing financial statements under the 5th schedule. Non-current liabilities may amount due to associated companies and related parties shall be separately disclosed. So if there is any amount which is non-current and is due to associated company or related parties, it has to be separately disclosed. Or the above disclosure is also required under the 5th schedule. And this is the only one requirement as far as the non-current liabilities are concerned. So the focus is कि अगर related parties से कोई amounts हैं तो वो अलग से आपने disclose करनी है. Current liabilities में there are few requirements, जैसे payable to provident fund, अगर कोई आपका fund को payable है from the company तो वो disclose होगा. Deposits, accrued liabilities and advances को separate line items में show करना है. Loans from separate line item के तौर पर show करना है. Loans from banking companies, other financial institutions को अलग से disclose करना है. Loans and advances from related parties, including sponsored direction, along with the purpose and utilization of amounts. So this may be again the related parties से loans and advances लिए गए हैं तो उनको अलग से disclose करना है. Or the loans and advances shall be classified as secured and unsecured. So if the company has current liabilities और उसमें loans and advances हैं, तो उनकी secured या unsecured जो nature है वो भी provide करनी है. And the same जो above noted disclosures हैं as far as the current liabilities हैं वो 5th schedule में भी provided है. Then the company has to provide a statement of compliance with section 218. Section 218 जो है वो retirement funds की जो investments है
उसके गिर्द है, तो उसमें एंटिटी is required to follow the requirements of section 218, और उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड की कुछ वो restrictions या guidelines प्रोवाइड करता है the section. The entity has to give a statement to entity whether it has complied with or not with the section 218. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में अगेन कंपनीज एक्ट में सेक्शन है 217, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की यूटिलाइजेशन पे है. इफ द कंपनी इज ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, द कंपनी कैन यूटिलाइज इट फॉर द बिजनेसेस प्रोवाइडेड इट्स ओन बिजनेस, प्रोवाइडेड कि इसका कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास है विद द कस्टमर, जिसके तहत वो बिजनेस में यूज कर सकता है. लेकिन जनरली सेक्शन 217 ये कहता है कि जो अगर ऐसा नहीं है तो then the secure deposits have to be kept in a separate bank account. तो उसके लिए ये डिस्क्लोजर है which outlines कि firstly the company has to bifurcate the deposits it has received or it is retaining with itself between those which are utilizable for its purpose, business purpose, and those which are others, यानी इसके अलावा जो है which do not fall in this category. And then if it is utilizing those certain जो security deposits हैं for its business, it has to disclose that as well. And if it's keeping deposits in a separate bank account, तो वो disclosure भी company को provide करना होगा. Contingencies and commitments का जो requirement है in case of legal proceedings, the company जो अगर कोई legal proceedings हो रही हैं company की, तो जो नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी, सो अगर कोर्ट में है, किसी एजेंसी के साथ है या किसी अथॉरिटी, सो कुड बी इस सिलसिले में उसके डिस्क्लोजर की कौन सी, उसका नाम बताना है, कब ये स्टार्ट हुआ था, इसमें कंपनी और कोई और भी प्रिंसिपल पार्टीज अगर हैं तो वो बताना है, और जो अब तक की फैक्चुअल बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग है और उसमें कंपनी जो है वो क्या रिलीफ रिक्वेस्ट कर रही है या क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो डिस्क्लोज करना है. एंड द सेम डिस्क्लोजर रिगार्डिंग contingencies or legal proceedings is also required in the fifth schedule. Moving towards the statement of profit and loss, इस सिलसिले में जो disclosures हैं वो दोनों जो schedules हैं fourth और fifth, उसमें एक ये है कि if the company is showing जो turnover है, तो उस सिलसिले में जो टर्नओवर को जब डिस्क्लोज करना है तो उसमें डिडक्शंस करनी होंगी और उन डिडक्शंस को रिफ्लेक्ट करना होगा सेपरेटली. तो डिडक्शन जो है जैसे डिस्काउंट है या सेल्स टैक्स है या कोई और टैक्स है विच इज डेबिट ऑन द टर्नओवर, या उस बेसिस पे टर्नओवर में शामिल है या उस अमाउंट में शामिल है जो कि टर्नओवर के तौर पर रिफ्लेक्ट की जा रही है, तो उसमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. तो ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली देखें तो जो अगर हम IFRS 15 या कोई और IFRS 15 को देखें तो नॉर्मली जो सेल्स टैक्स या वो टर्नओवर नहीं होता कंपनी का, इसलिए उसको यानी हम टर्नओवर में शामिल उस तरह टेक्निकली नहीं करते. लेकिन क्योंकि ये डिस्क्लोजर फिफ्थ स्केड्यूल या फोर्थ स्केड्यूल का ये रिक्वायर करता है कि सेपरेट प्रेजेंटेशन करनी है, तो देन वी हैव टू show that as within the turnover, and then show in the underlying line है उसमें as a deduction from the turnovers, for example sales tax. So this is a requirement of the fourth or fifth schedule. Auditors remuneration की specific disclosure provide करना है, जिसमें audit जो audit carried out है उसकी अगर fee है उससे related कोई expenses हैं which are generally out of pocket expenses या reimbursable expenses या कोई भी नाम है, तो वो the auditor if has done certain other engagements as auditor तो वो provide करनी है. And if the auditor जो है has rendered other services, for example tax की या कोई और services नहीं है, तो उनकी भी fees या information numbers में provide करनी है. So this is the requirement around auditors remuneration. And in case अगर joint auditors हैं तो fourth और fifth schedule ये require करते हैं कि जो joint auditors का separate disclosure, यानी auditor A का भी disclosure आएगा और auditor B का भी. There should not be an aggregate of total aggregate of the audit fees, rather auditor A and auditor B का separate audit fees और इसी तरह बाकी expenses वगैरह का disclosure required है. This is an illustrative. Donations में the fourth schedule
जो है वो ये रिक्वायर करता है कि इफ देयर इज अ डोनेशन बाय द कंपनी और देन देयर इज अ थ्रेशोल्ड जहाँ पे वो डिस्क्लोजर ट्रिगर होगा, वो यही कि अगर exceeds 10% of the total donations made by the company or rupees 1 million, whichever is higher. तो इसमें से वो एंटिटी को डिस्क्लोज करना है नेम ऑफ द डोनी एंड इन केस द नेम ऑफ यहाँ पे किसी डोनेशन कंपनी ने दिया है एंड इट हैज गिवन टू एन एंटिटी और टू अ पर्सन वेयर इन विच द डायरेक्टर्स हैव एन इंटरेस्ट, तो एंटिटी को वो स्पेसिफिक जो डायरेक्टर या स्पाउस का इंटरेस्ट है उस सिलसिले में on the name of the directors has to be disclosed. So, for example, if entity has given, a company has given a donation to a charitable organization which is run by the director, so then the name of the director has to be disclosed in the financial statements. कि इन डायरेक्टर की एक charitable organization को donation दिया गया है. The same disclosure is required in the fifth schedule. अमाउंट चार्ज टू एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर्स, जैसे कि हम रिलेटेड पार्टी में भी डिस्कस कर रहे थे, तो द फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल जो रिक्वायर करते हैं वो जैसे हम डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर नॉर्मली होता है, तो वो रिक्वायर करता है और उसमें वो सर्टेन जो एक्सप्लेनेशन है वो यही कि जो भी उनकी आप फीस पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन है, कमीशन, बोनस, परक्विजिट्स, कोई और जो बेनिफिट्स उनको ऑफर किए जा रहे हैं, ग्रेचुइटीज वगैरह, तो वो आपने कंपनी ने डिस्क्लोज करनी है फॉर दी डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स. So executive की फिर हमें we would be falling back on the definition that has been provided in the fourth schedule. Those basis पे हम we would be identifying the executives. So there could be individuals within the company who are not key management personnel, but they are falling within the definition or in the definition of executive, जिनकी basic salary ज़्यादा है, तो then ये disclosure फिर उन individuals से relevant जो fees हैं या remuneration हो भी applicable हो जाएगा. The same disclosure is required in the fifth schedule. And last is that in case के अगर कोई royalties pay की हैं company ने to other companies or individuals or entities, तो जो royalties हैं उनमें name of the registered जब pay कर रहा होगा, जब pay करता है तो जो reporting entity has to disclose the name of and registered address if it's an entity or company, तो उसका बताना है, and relationship with the company or directors if any. So if there's any relationship of the person to whom the royalty has been paid, so person means company या कोई भी individual, और उसका relationship है with the company or directors, right? Then that relationship has to be disclosed. The same requirement as far as the royalties paid by the company is provided in the fifth schedule. So this was the last item कि जहाँ पे अगर royalties paid expense के तौर पे या उस तरह reflect हो रही हैं, तो उसका एक disclosure require करता है fourth as well as fifth schedule. This ends my presentation. Okay, time or I understand कि probably 1:15 तक था because I started slightly late, तो schedule था उससे. So we are close to 1:30. So yes, I'm available for any question. जी, there is a question on Zoom. मैं वो देख लेता हूँ.
an asset classified as, यानी अगर कोई asset classify होता है as asset held for sale under IFRS 5, जो कि as entity has a plan to sell that asset, तो उसका एक separate standard है और इसको ये requirements है. If the entity has classified certain assets as asset held for sale, तो उसकी क्वेश्चन में उन्होंने ये सिनेरियो बताया है कि उसकी अगर WDV यानी बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू इज एक्सीडिंग 5 मिलियन, तो क्या फिफ्थ स्केड्यूल के मुताबिक या फोर्थ स्केड्यूल के मुताबिक कोई डिस्क्लोजर देना है या नहीं देना, जो मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है. सो माय अंडरस्टैंडिंग अगेन इज के जो फिफ्थ या फोर्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे हैं. सो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अगर हम कर रहे हैं क्लासिफाई, तो दे हैव नॉट येट बीन डिस्पोज्ड, तो इसलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्थ और फिफ्थ जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी. जी महर. जी सर. जी, if we have questions from the audience, otherwise we can. Is there any question from the audience? Yes, one question is there, sir. Thank you very much for the presentation. I would like to ask, how do you relate the disclosures as per the IFRS and the company's ordinance, and how do you make the controls on it? Secondly, what is the overlapping area which you have found between the IFRS and the company's ordinance for disclosures? जी, thank you. Initially, जैसे I mentioned के the intent of the regulator or जब and we were also looking at the disclosures, तो has been के there should not be any overlap. लेकिन there could be certain disclosures, for example जैसे related parties के disclosure शायद फोर्थ या फिफ्थ स्केड्यूल में भी कुछ आउटलाइन है, और सिमिलरली जो IS 24 है अगर उसका प्रिंसिपल देखें तो वो वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है. सो ये कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पे पॉसिबली ओवरलैप हो सकता है बिटवीन दी IFRS एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल. एंड अगर हम जिस अभी देख रहे थे तो डिस्क्लोजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सर्टेन डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड पार्टीज एंड एसोसिएट्स के नाम से within the fourth and fifth schedule. On this, एक clarification from my end, मेरी understanding है जो fourth और fifth schedules हैं ये associates और related parties की term use करते हैं. लेकिन अगर हम technically देखें तो associates जो हैं वो related parties होती हैं of the reporting entity. तो ये probably अलग से definition अलग से नाम use करने की to my understanding कोई रीजन उस तरह नहीं है. वन रीजन कुड बी कि जब इनिशियली कंपनीज एक्ट आया था 2017 में, तो उस वक्त एसोसिएट की जो डेफिनेशन थी वो कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड थी, और अकाउंटिंग के गिर्द वही डेफिनेशन यूज करने की गाइडेंस थी विद इन द कंपनीज एक्ट. और वो एक डेफिनेशन थोड़ी थ्रेशोल्ड बेस्ड है और उसमें वो 20% उस तरह का जिक्र है, जबकि स्टैंडर्ड जो है वो बोर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है ये जो एसोसिएट से रेलेवेंट है. तो और ये उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस को. लेकिन देन इसके ऊपर जब ड्राफ्ट के बाद जो डिस्कशंस हुई तो फिर ये हुआ कि एसोसिएट की जो डेफिनेशन है वो एज ऑफ द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की यूज होगी. सो ये एक क्लैरिटी मुझे नजर आती है कि एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज की जो है वो ओवरलैप है. लेकिन as far as your question is concerned, तो जो ओवरलैप नजर आएगा probably related party disclosures के गिर्द हो सकता है. And the second question, sorry, आपका क्या था? If there was any. My second question was that since you are also in the technical committee, what is the frequency of updating the disclosure checklist by the ICAP? And are you anything on your agenda to make it a real-time disclosures templates available for the members and the audit firms so they can pull it even on the onlines? Because if you move out of Pakistan, there are authorities which have given the online templates to company can fill them, and then they can come out with the financial statement which are in compliance with the IFRS. Thank you for this. When the Companies Act came out in 2017, institute or this department we have issued
illustrative financial statements based on IFRS and for schedule requirements. We have also issued guidance sort of for illustrative financial statements based on IFRS for SMEs and fifth schedule. So those are available. We've also issued disclosure जो checklist है based on IFRS and the fourth schedule. So those are available, and because IFRS may post that issuance कुछ changes disclosures की आई हैं, so we would be updating those documents, but the base documents are available on the institute's website. Anyone else who has a question? Or Sir Sohail, we do not have any question from the audience as of now. Right. In the end, I would like to thank you all. I'm sorry, मैं physically शायद ज़्यादा बेहतर होता है interaction, presentation, लेकिन again technology का एक फायदा ये भी है कि मुझे यहाँ से कहा गया कि इस्लामाबाद से मैं दे दूँ, and because I work from Islamabad office, so it was convenient to me as well to that extent. Lekin yes, inshallah, in future I would love to have a physical interaction hai, with you all. Secondly, because ये दो technical topics के ऊपर था, auditing and accounting, and the major chunk जो है in seminar का वो on these two areas है. So I would like to also highlight that institute has a technical helpline की facility है. We try to answer the questions within the 5 days जो हमें जब मिलते हैं. इसी तरह, for that you can post the question. Members can post the question on the technical helpline. We also have the accounting standards board and the auditing standards committee, and anyone can pose a question or raise a question on auditing, accounting, or ethics related matters. And if the question is of such nature or the inquiries of such nature कि उसका एक written response issue करना चाहिए, so then those items or matters are considered by the relevant forum. So these are the two forums जहाँ पे आप या two boards हैं जहाँ पे we can respond to your inquiries and questions, and you're more than welcome कि अगर आपको after this presentation या after this in these sessions भी अगर कोई questions हो तो we would be available to answer. The technical helpline is जो details हैं available on the technical services का जो web page है उस पे है, and you can also write directly for the written responses if you believe a written response on the matters is required. However, I'd like to emphasize कि वो matter थोड़ा सा widespread होना चाहिए, उसकी nature significant होनी चाहिए for the accounting board or auditing committee to consider issuing a written response. Otherwise, we normally respond over the phone, which is a normal protocol of technical helpline. Thank you very much.